Okay, so let us begin with this 37th lesson, Pioneer Scientists of India. इसमें आपके पेज पे लेफ्ट मोस्ट साइड पे और राइट मोस्ट साइड पे कुछ साइंटिस्ट की इमेज और उनके नाम है एंड वी ऑल नो दे वर ग्रेट. बट इसमें है क्या कि उनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इन द सर्कल्स और आपको गेस करना है कि विच साइंटिस्ट वाज इट. सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट वन. You all remember the rules. Raise your hand to answer. जैसे पहला है आपका, he is called the father of India's chemical industry. He was a great chemist of India. He was also the author of the history of Hindu chemistry, which has been recognized worldwide. He also actively participated in politics along with Gandhiji and Gopal Krishna Gokhale. Who will be answering this? बुक के पीछे आंसर लिखा है, इसका मतलब लोगों ने बुक भी नहीं खोल रखी, फॉर्मेलिटी भी करने को रेडी. यस पूनम. Sir, PC Ray. PC Ray. Okay, good. The second one, he is the man behind the Green Revolution in India. He invented techniques to raise agricultural production. He developed high-yielding varieties of wheat and rice. Aditya. Sir, M.S. Swaminathan. M.S. Swaminathan, yes, that's right. The third one, he was a great mathematician and a physicist. He introduced statistics which explain the behavior of radiation. The elementary particles like protons and alpha particles which obey Bose statistics have been named bosons. Third one, Soumya. S.N. Bose. S.N. Bose. ठीक है. The fourth one, he was India's topmost ornithologist. Though he did not have any degree or formal education of the subject, but with his hard work and zest, he gained fame in this field. He wrote many books on birds and animals. Sumit. Sir, Salim Ali. Salim Ali. ठीक है. Fifth one, he is a science fiction writer and a great astrophysicist. He did his research work in astronomy at Cambridge University under Fred Hoyle, who was one of the best astrophysicists in the world. Khushi. Sir, J.V. Narlikar. J.V. Narlikar. ठीक है. Yes. The sixth one, he was the first director of the National Physical Laboratory of India. He was a great physicist who worked under Sir C.V. Raman in the field of optics, the study of light. He was elected a fellow of the Royal Society in 1940. Poonam. K.S. Krishnan. K.S. Krishnan, yes, that's right. The seventh one, he established the Institute of Palebotany at Lucknow. He was a great paleobotanist. The institute which he established is named after him. Aditya. So, Birbal Sahani. Birbal Sahni, ठीक है. Eighth one, he was the founder of a magazine called Science and Culture. He was one of the best astrophysicists of India. His discovery helps the astronomers to know the temperature, pressure and many other facts about the interior of any star, including sun. Soumya. Meghnad Saha. फिर से बोलना बेटा. Sir, Meghnad Saha.
मेघनाथ साहा, यस, ठीक है. द नाइन्थ वन, he made significant contributions to Indian satellite and launch vehicles of Indian Space Research Organization and to the missile program of Defense Research and Development Organization. He is called the Missile Man of India. He is none other than Dr. APJ Abdul Kalam, our former president and a great human being, जिसको हम सब लोग जिनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. Okay, let's move on to the 38th lesson. Technology that transforms society again involves a lot of reading, जिसमें इंटरनेट के बारे में है, पीसी, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, ईमेल, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन, इस तरह से. ग्रोसरी के लिए ग्रोफर्स हो गया आपका. एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सभी लोग जानते हैं क्या है. तो इसमें डिटेल्ड है इसी के बारे में. नाउ यू विल हैव टू रीड दिस, सो कंसीडर दिस एज योर होमवर्क. लेट अस लुक एट द 39th चैप्टर, एंशिएंट इंडियन मेडिसिन एंड सर्जरी. कि एंशिएंट इंडिया में मेडिसिन और सर्जरी के लिए किसके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे और क्या बातें थी, कौन सी बुक्स थी. तो इसके बारे में भी डिटेल्स है कि इसे 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है. द प्री वैदिक पीरियड फ्रॉम 6000 BC to 1500 BC, द वैदिक पीरियड 1500 BC to 600 BC. BC here stands for before Christ, and the post वैदिक पीरियड 600 BC to AD 200. ठीक है. तो इसमें हमारे हिस्ट्री के अकॉर्डिंग लॉर्ड ब्रह्मा वॉज द फर्स्ट टीचर टू मेक अ कंपाइलेशन ऑफ आयुर्वेदिक टेक्स्ट which he later abridged into 8 parts with Kaya Chikitsa and Shalya Tantra. ठीक है. फिर then comes Atreya was an eminent sage and a pupil of Bharadwaj at Takshila. He taught medicine, observed symptoms, diseases and their correlation. He is rightly known as the Hippocrates of ancient Indian medicine, as well as the father of Indian medicine. फिर आता है नाम चरक का. He was one of the great sages, और इनके ही नाम पे है चरक संहिता, which is again a very important book for those who study medicine. ठीक है. फिर इसके बाद धन्वंतरी नाम अगेन इज फेमस, कंसिडर्ड टू बी द डॉक्टर ऑफ गॉड्स. ठीक है. लाइक अत्रेय, धन्वंतरी became a renowned teacher of surgery at Banaras and later came to be known as patron saint of surgery. अब इसके बाद सुश्रुत का नाम आता है, who is the most well known and revered name इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. इंडिया की बात करें अगर, सुश्रुत संहिता, इनके डिजाइन किए हुए सर्जिकल इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स आज भी यूज होते हैं. फादर ऑफ सर्जरी भी इनको शायद कहा जाता है. इनके बारे में भी बहुत अच्छा है. सो यू ऑल विल रीड दिस. सो नाउ यू हैव टू रीड 2 chapters फॉर योर होमवर्क, 38th and 39th. Both different but interesting. Now let us look at the 40th one, which has some exercises. Social plus media is equal to sodia. एक इन्होंने हाइब्रिड वर्ड कह सकते हैं दे दिया. रीड द स्टेटमेंट्स एंड राइट द करेक्ट आंसर्स. ये एक्सरसाइज है. तो आप इसमें फर्स्ट वाला है, इट इज अ सेटअप टू डिस्कस सम इशू कंसर्निंग पीपल. इट मे बी ऑनलाइन, televised, physical, etc. It consists of people who discuss their points of views in order to come to a conclusion on what really is the solution to the problem at hand. It is often preceded by the word discussion. ठीक है. तो अब इसके बारे में है कि ये एक ऐसा सेटअप है जिसमें कि किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे से जुड़े लोग किसी एक मुद्दे पे चर्चा करते हैं और उस चर्चा के बाद वो किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. तो ये क्या होगा? सो हु इज गोइंग टू आंसर दिस? लास्ट टाइम इट वाज द टर्न ऑफ सुमित. यस. सुमित ने अभी लग रहा है पेज नहीं पढ़ा.
Okay, Sumit, you can wait. Khushi, Sir, forum. पहले वाले का है आपका फोरम, ठीक है, सही है. Second one, it is an image or username that represents a person online, most often within forums and social networks. Soumya, Sir, avatar. well, your voice was not that clearly audible, but yes, it's avatar जिसे हम लोग कहेंगे, ठीक है. The third one, this word was created from two words, web plus log. They are usually maintained by an individual or a business with regular entries of content on a specific topic, descriptions of events or other resources such as graphics or video. तो आदित्य, So blog. blog, yes, ठीक है. Fourth one, it is represented by the small star icon on Twitter or other social networking sites. Favoriting a tweet or comment signals to the creator that you like their content or post. ठीक है. This time it's the turn of Poonam.